Hi everyone, I hope you all are doing literally amazing. It is 2025 and this is my second video by the way. I've done one more video by gracefully like in this year ये मैंने कर लिया है. So ये मेरा second video है and आज के video में मैं आपको introduce कराने वाली हूँ एक नए किताबों के साइट से जिसके बारे में मुझे बहुत पहले से पता था. But पता नहीं why I was not even having time to go through it. Like I think Amazon is my comfort zone. तो मैं हर बार आई एंड अप बाइंग फ्रॉम अमेजोन बट दिस टाइम आई वेंट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड आई हैव हैड माई परचेज फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल वेबसाइट. I am like fairly enough very satisfied. So I'm talking about Bookspring India. Yes, so Bookspring India से मैंने रिसेंटली कुछ किताबें ऑर्डर की. अगर आप भी वहाँ से कुछ किताबें ऑर्डर करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है. और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अनबॉक्सिंग कैसे किया उसका. एंड अनबॉक्सिंग के बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी उन 6 बुक्स के साथ जो मुझे बुक स्प्रिंग इंडिया से मिले मात्र आई गेस अराउंड 1200. नहीं. ओके, सो अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं. अब मैं आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ कि आपको ये बुक्स खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए बुक स्प्रिंग इंडिया से. सो लेट मी स्टार्ट. वेल, बिफोर आई इंट्रोड्यूस, आई थिंक आपने देख ही लिया है इन द अनबॉक्सिंग दैट विच बुक्स आई बॉट. लेट मी टेल यू, ये वो बुक्स हैं जो मैं कभी रिस्क आउट नहीं करती. बिकॉज ये बुक्स मेरे को पढ़ना था बहुत लंबे टाइम से एंड दे वर kept in my cart for a very long time. And I was wondering like when will I be able to order this, because इतनी किताबें जो मैंने पढ़ी ही नहीं है and they just kept. I don't know where the hell I'm going to read them, but yeah, I'm just collecting books now. So one day randomly I know about Bookspring India from a very long time, but I was not daring to order from them. So I got this site from Instagram again, and while going through it, I was like, now it's high time to order something from them. So I don't know what goes wrong with me. I take decision very suddenly. So I just went out there and वो सारी किताबें जो मेरे Amazon के कार्ट पे थी मैंने वहाँ पे सर्च किया, मुझे सब मिल गई. सब मिल गई.
Prices, I'll tell you, I'd not say 50% they were less, but they were, fairly very less what I was getting at Amazon. So I was very much wondered. उसमें से एक किताब मेरे दिल के बहुत करीब थी और मुझे था कि मुझे वो किताब अच्छे कंडीशन में चाहिए. So yeah, and I have waited just for 6 days for them to deliver the parcel. What they did initially was I've received a call from them and they have taken an order of confirmation because मैंने COD किया था. Let me tell you, whenever I order any kind of thing, अभी मैंने recently bookstohome.com से जब order लिया, मुझे आपके इतने सारे queries आए कि किसी से OTP मांगा जा रहा है, किसी को वो response नहीं दे रहे हैं, किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं, आपने ऑर्डर कर दिया, आपके बुक्स डिलीवर नहीं हो रहे हैं. ये सारे कारण हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एक्सटर्नल साइट से कभी भी बुक्स मंगाते हैं, प्लीज गो फॉर COD. Come on guys, it is common sense. We are all at the age where we are gonna use this sense. So I request you people, please go for COD, right? You can do it at the last moment, and that too, please, even at the time of COD, please do COD only. We can have cash, right? We have ATMs nearby, so please keep cash with you. And that's what I did. I did COD and I received I got a call for confirmation, because obviously, because they are sending books from very far, so they'll be confirming. You will not refuse at the last moment, right? So I got a confirmation call and immediately exactly proper tracking किए गई है उसकी, कुछ भी आगे पीछे नहीं, exactly on the day and the time I have received the books. Yes. So unboxing, you have seen how safely and how well they have packed the books. And the most beautiful part was those 3 beautiful cute bookmarkers. Okay, literally, I've ordered multiple books from everywhere, they don't give you bookmarks, but if they're giving, so there only they have won my heart. So now let us start with the books. Now the first one is this one. This is, who doesn't knows about Kite Runner, one of the most famous book. The condition पे आ जाती हूँ मैं directly. See, ये ना, but it's like 1920, 1920 है. You'll get from Amazon and them. Not much changes. I will definitely prefer buying from them one again if this is how they are sending me the books. Next one was beautiful and the cute one. That's the American Roommate Experiment. Fair enough. Good condition, guys. Look at the cover. Everything is fine. Like, you won't feel that you are paying half for this. This so I've started reading also. See, एंड ये वो किताब थी जिसके लिए मैं बहुत कंसर्न थी कि मुझे इसकी कॉपी जो है ना, बहुत अच्छी कॉपी चाहिए थी. बट अगर मैं बोलूँ कि 6 बुक में से किस बुक से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ, तो ये बुक है. आई मीन, it's fine, it's fine, I'd say, but still I felt that printing could have been little better. जिस तरह से पिक्चर्स में कॉन्ट्रास्ट कम होता है ना, it's something like that. Still I am happy because I love this book. Yeah, this is beautiful. If you want to give somebody a book, and that person is super super good, gift this book. I will review this for you people. Next, Kite Runner के author say Mr. Khalid Hussain. I have the 1,000 Splendid Suns, and I wanted to read this because of Mariam. Like, what is she facing, just to get to know that. And this has changed my perspective towards this kind of writing. It's beautiful, it's soul touching. I have literally cried in 3rd and 4th page itself when the mother describes it, how she has given birth to Mariam, what kind of pain she has gone through for 2 days. That was so painful. अब मैं रिव्यू क्यों कर रही हूँ, but still I'll review separately. But see the quality, see the cover. नहीं लगेगा आपको कि that you have paid an amount lesser than Amazon. Very good quality of books. Before the coffee gets cold, I'm regretting buying this book because this will take you to time machine. आपको वापस ले जाएगा कि आप कौन से मोमेंट को दोबारा जीना चाहते हैं. It's full depressing. I think this would depress me if I read this. I don't know when I will, but let's see. So this is a very famous book, by the way. It's a good book. And मुराकमी, मुझे समझ में नहीं आया कि लोगों को पसंद नहीं आता है, कई लोगों को मुराकमी. पीपल हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव. मैंने कभी डील नहीं किया है. आई हैव नेवर रेड मुराकमी. सो दिस वाज काफ्का ऑन द शोर. ये रिव्यू मैंने पढ़ा है एंड आई फेल्ट कि माई माइट बी हैप्पी एटलीस्ट बाय रीडिंग दिस. लेट मी सी इफ आई गेट टू रीड द अदर वर्जन्स एज वेल. सो दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर द मी, बट again I'll come to the quality. It's fair enough. I think I would have received nearly same copies from Amazon as well. So I'm not at all regretting my purchase from Bookspring India. I have received 6 books, that too the books which I intended to buy from a very long time. Like, I was wondering that I want these books for me. So yeah, look at them. They are in good condition, beautiful condition, readable books.
properly good printing and everything. बहुत माइन्यूट डिफरेंस है. यू वोंट रिग्रेट बाइंग फ्रॉम देम. ओनली वन सजेशन आई गिव यू इज COD, सो दैट अगर आपके साथ कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप रिग्रेट ना करें कि आपने पे कर दिया है, वेदर यू विल बी रिसीविंग द मनी बैक और नॉट. सो बेटर यू गो फॉर COD एंड यू कैन फेयरली ऑर्डर. आई विल से या दे आर, इफ you I want to choose between books to home, Amazon and Booksprint India. Of course Amazon will be my first choice because मुझे वो authenticity वहाँ से feel होती है. Still any other site I'll go with Booksprint India, not even Kitab Lovers, because I said you कि those used books and specifically जो मैंने इंटेंड नहीं किया मुझे वो पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ पे मुझे जो चाहिए वो मुझे उससे कम प्राइस में मिल रहा है. सो व्हाई नॉट. Yeah, so I hope you like the review, and yeah, you can buy from them definitely, but COD, right? And don't tell me that this is a trouble and so and so and so COD करिए and save रहिए. ठीक है, bye bye, take care.